So guys, welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. So guys, today I come back with new opportunity for you from MTX company is currently hiring for the role of consultant trainee for Salesforce and full stack developers, quality assurance and project coordinates. Uh, so guys, in this video I will discuss about eligibility criteria, what you need to, what are the selection process for this job and job location. So let's start the video. Eligibility criteria will be degree in BTech, B, MTech, ME, MCA, Engineering and Technology stream. If you cleared graduation in BTech, B, MTech, ME, MCA in engineering fields, then you can apply. Company is hiring for the role of Salesforce and full stack developers, quality assurance and project coordinates. 2019, 2020 and 2021 batch students are eligible for this drive. This is off-campus drive for MTX. The candidates who already participated in first phase of MTX drive, off-campus and on-campus, are not eligible for phase 2 drive. Date of joining for this is September 13, 2021. You need to submit the application form before 19th August for this job. Hiring process includes 3 phases. Like first there will be online assessment exam which consists of programming skills, aptitude test and domain specific questions which will be a virtual, and second round will be a technical interview round, it is also virtual round, and third round will be a HR interview round, it is also virtual, and your job location will be Jaipur, Hyderabad, India. So you need to fill this Google form, like email, you need to enter your email, applicant name, your name, your email ID, contact number, college name and your current location, qualification like B, BTech, ME, MTech, MCA. You need to mention the graduation or post graduation stream, in which branch you completed your engineering, like computer science, information technology, electronic and telecommunication, computer applications, and you need to mention your year of passing, like 2019, 2020 and 2021. पोजीशन यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर, तो आपको इधर चूज़ करना पड़ेगा कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो. जैसे कि इसमें पोजीशन दी है कंसल्टेंट ट्रेनी, सेल्स फोर्स, फुल स्टैक, क्वालिटी एनालिस्ट और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर. तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है. फ्रेशर हो तो फ्रेशर 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स और 12+ मंथ्स तो आप चूज़ कर सकते हो. मेंशन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इन ईयर्स, अगर आपके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है तो आप इधर मेंशन कर सकते हो. फिर 10th का आपको परसेंटेज लिखना पड़ेगा इधर. फिर 12th का परसेंटेज रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन परसेंटेज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन परसेंट. फिर आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा, आई हियर बाय कंफर्म दैट आई हैव नॉट अपीयर्ड इन MTX रिक्रूटमेंट इंटरव्यू प्रोसेस इन लास्ट 6 मंथ और इन ऑन कैंपस ड्राइव. तो आपको आई कन्फर्म द सेम चेकबॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा. फिर आपको अपना रेज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा. जैसे आप अपना रेज्यूमे अपलोड करेंगे तो आपको नीचे एक सबमिट बटन दिखेगा. जैसे आप सबमिट बटन प्रेस करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, MTX कंपनी के पास चले जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म. So guys, thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel. I will provide this job link in the description below. Bye bye, see you soon.